नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं और मैं यहाँ पर एक दो लोगों को होस्ट भी बना देता हूँ। और सबसे पहले मैं शशि तिवारी मैम से पूछूंगा कि मैम आप कैसी हैं? डॉक्टर शशि तिवारी मैम, आपका तबियत कैसा है अभी? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर, मैं ठीक हूँ। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर, मैं अभी आपका कान ठीक है ना? इतने आप दिन कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आपके कान का क्या हालचाल है? कान ठीक है ना? वो हाँ सर, ठीक है। हाँ फिर जी ठीक सर। है। और आप अभी उधर ही है, मतलब कहाँ पे हैं? हाँ, वाइजैक में हूँ वाइजैक। सर, जून में जाऊंगी। अच्छा अच्छा, मतलब स्वास्थ्य को ध्यान में रखिए। वहाँ गर्मी है कि कैसा है, मौसम कैसा है? यहाँ पर सर काफी गर्मी थी, अभी एक दो दिन हल्की फुल्की बारिश हुई तो थोड़ा ठीक है। एक्चुअल में ह्यूमिडिटी यहाँ ज्यादा होती है, इसलिए गर्मी ज्यादा पता चलती है। तो 35 वगैरह का तो टेम्परेचर या 32 तो जा ही रहा है, बट उस हिसाब से गर्मी थोड़ी ज्यादा लगती है। अभी 2-4 दिन से ठीक है, उधर काफी लग रहा था गर्म। तो जो आपके पेशेंट है उनको आप ऑनलाइन देखते हैं, कैसे देखते हैं आप? अभी तो सर जितने पुराने हैं वो तो सारे ऑनलाइन चल रहे हैं। हाँ हाँ। तो आप जी सर। ऐसे प्रिस्क्राइब कर देती हैं दवाइयाँ उधर से? हाँ जी सर, वो तो मैं शुरू से प्रिस्क्राइब करती थी, अपनी फीस लेती थी। बट हाँ। अभी तो मैंने सोचा है कि कई सारी चीजें बनाऊंगी, जैसे बनाती भी थी, और कई सारी चीजें मंगा कर अपने पास से अब डिस्पेंस करूंगी। बट अभी तक तो मैं शुरू से प्रिस्क्रिप्शन ही लिखती थी। लेकिन आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, ये कोई डाउट नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट है आप। थैंक यू जी थैंक यू मैम, थैंक यू। सर। और डॉक्टर श्वेता मैम, आप कैसी हैं? श्वेता मैम बोलती नहीं है। श्वेता मैम कैसी हैं? श्वेता चौधरी कैसी हैं आप? ठीक है। आपको एक चीज तो बताइए ना कि आपके पेशेंट कैसे ठीक हुए, क्या हुए, कुछ बताइए। ठीक हुए मतलब सर, दवाई तो पेशेंट को तो मैं सर अभी तो आपसे ही दवाई लेके वही चालू है, सब देती हूँ। और आपके आम पाचक वटी और सब पाचक वो चालू है पेशेंट्स को, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं सर। जी ठीक है, आप करिए फिर हमें भी बताइएगा और भी पेशेंट का। जी सर, जी सर, जरूर सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। और आदित्य मैम, प्रशांत भट्ट जी कुछ बोलिए आप लोग कृपया। सर प्रणाम। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, हाँ बताइए सर। हाँ सर, मेरी एक पेशेंट आ रही है पूजा नाम से, तो अभी मैं आ भी रही ज्वाइन, है? हाँ अभी 8:30 तक ज्वाइन कर लेंगी वो। ठीक है सर। और बाकी वो जी आपके सर, एजीएन के पेशेंट कैसे हैं सर? वो तो ठीक है सर, बढ़िया है वो, बढ़िया रिकवर कर गए। जी तो अभी आएंगी तो बताऊंगा मैं आपके लिए। ठीक है सर, ठीक है। जी थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू और सर। डॉक्टर मुकेश, थैंक यू सर। डॉक्टर मुकेश कुमार जी, आपका प्रैक्टिस कैसा चल रहा है अभी? मुकेश कुमार जी सुन रहे हैं क्या? नमस्कार सर। आपका 3 महीना हो गया ना हेलो। तो स्टार्ट किए?
जी सर, अभी सर बीच में बंद था सर लगभग 20 दिन के लिए। ठीक है, तो अभी कैसे हैं आप सर? आपका प्रैक्टिस कैसा चल रहा है? ठीक है सर, दादाजी एक्सपायर हो गए थे तो क्लिनिक सर ऑफ था अभी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है सर, फिर बताइएगा। और वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी, थैंक यू सर। मुकेश जी, वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी कैसे हैं आप? कॉलेज गए थे? हेलो, कॉलेज गए थे क्या मिश्रा जी? जी सर, लाउड साउंड कैसा लगा कॉलेज? बहुत अच्छा कॉलेज। ठीक है, तो आप अभी उधर ही हैं कि दिल्ली में? मैं अभी बस में हूँ सर, लाउड साउंड। अच्छा ठीक है ठीक है, अपना ध्यान रखिए, खाना खा लीजिएगा रात को। अभी मैं पहुँच रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। और डॉक्टर राम कुमार जी क्या? वाला हाँ सर, काफी ठीक हो गया सर। आपने विरेचन दिया था ना? विरेचन या वमन पूछ रहे थे? पमन भी दिया, बेचन भी दिया, काफी अच्छा हो गया। हाँ तो वो, और वो सूर्यवंशी जी कैसे हैं? मूछ वाले डॉक्टर, मूछ वाले आर्मी वाले। उनका वीडियो भेजा था ना ग्रुप में आपको। हाँ हाँ 20% तक बस रह गया सर, 15 से 20% का पॉलिसी। ठीक है, आप आज कब पहुंचेंगे फरीदाबाद? अब तक मैं पहुंचूंगा रात को 10 बजे। ठीक है सर, आवाज कट रहा है शायद। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। और डॉक्टर राम कुमार जी कैसे हैं सर? डॉक्टर राम कुमार सर जी, बढ़िया सर, गुड इवनिंग सर। आप कोई पेशेंट के बारे में बताइए। राम जी, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। हाँ जी सर। सर मेरे पास एक पेशेंट था सर, जो आपको बताया था सर। हाँ सर। हाँ तो सर वो उनको एक अच्छी पोषक दे रहे थे सर, जो साइड का पेन वाले में था, और एक ऑर्थराइटिस वाला था जो सर। हाँ सर। और एकांग वीर रस दे रहे थे सर, जी तो महायुवराज गूगल दे रहे थे सर। जी। और एक सर वो दे रहा सर, उनको गैस भी बनती थी और अपान वायु जैसे होता था, दूसरे का रस दे रहा था सर, और आरोग्य वर्मी बटी सर। जी। तो लेकिन सर उनका जो साइड का पेन थे वो सर कम नहीं हो रहा था सर। अच्छा हाँ सर। ठीक है, आप मतलब उनका क्या अभी डिफिकल्टी आ रही है ठीक करने में? उनका सर डिफिकल्टी ये हो रहा है सर, जो नेक से लेके एंड तक जो दर्द ज्यादा ऊपर उठता नहीं है सर उनका। सब ठीक हो जाएगा सर, आप एक बार केस टेकिंग करके बताइए ना कि क्या मेन प्रॉब्लम, हेतु क्या है, हेतु ठीक है बताइए। सर, डेफिनेटली सर। हाँ ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और डॉक्टर सत्य प्रकाश वर्मा जी कैसे हैं सर? सर हाँ सर बोलिए, आदित्य सर बोलिए। सर मेरे पेशेंट एक मतलब मेरे जूनियर है डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी से, हाँ हेमा सुब्रमण्यम। उनके बच्चे को बचपन में ब्रोंकियोलाइटिस हुआ था, 4 साल की बच्ची है। तो उसके बाद से बार बार कोल्ड एंड कफ होता रहता है, ठीक है, साल में 6-7 बार। तो उनको वो लेके ज्वाइन हेमा जी कृपया वीडियो ऑन करिए मैम। वो इंग्लिश ओके, और स्पीक इन तमिल, इंग्लिश कन्नड़ा। ओनली। जी। ओके। डॉक्टर हेमा जी नमस्ते, हाउ आर यू? फाइन सर। अच्छा, इनका केस टेकिंग कौन करेगा बच्ची का? शशि मैम आप कर सकती हैं? मंदाकिनी मैम कोई करिए प्लीज। मैम प्लीज टेल ऑल द सिम्टम्स। हाँ सर। सर मैं बोल सकती हूँ, लेकिन अब मुझे ना प्रॉपर आपको मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स कन्नड़ा में मिक्स हो सकता है मेरा, ठीक है ना? यू कोई बात कैन नहीं, ट्राई कोई टू बात नहीं, आप ट्राई अंडरस्टैंड। करिए, आप ट्राई करिए। ठीक है, तो हाय हेलो। Hi ma'am. I can understand Hindi. My Okay. fluency is bad. I can understand. Okay, I want to speak with this kid. Hi. ನಿಮ್ಮ ಏನು ಹೆಸರು? Say Baby, hi. ನಿಮ್ಮ ಏನು ಹೆಸರು? Huh? She understands English very well, but Okay, other okay, language. okay. What is your name, beta? Tell me. क्या बोला? What she? Takshara. Takshara. Takshara, Takshara. Okay, okay. So, okay, ma'am, you only tell me about her health. I'll tell you, ma'am. So, What about her age?
Her age is coming June. She will be completing 4 years, ma'am. Okay, ma'am. And what is the complaint? Antenatally, there were no complaints at all, but I was diagnosed to be hypothyroid during my pregnancy, and I was on thyroxine tablets, ma'am, 50 microgram that time. Apart from that, no other relevant history during my pregnancy. Then after she was born, on her 35th day of birth, she developed some chest, what do they call it? Breathlessness? She had some breathlessness, difficulty in breathing and snoring and all. So we took her to the pediatrician there. He diagnosed her with bronchiolitis, and she was not given any medicine. She was only given oxygen nebulization, ma'am. For At the age of 1.5 months, no? You are correct, yes, ma'am. Around just over a month. over a month. Okay. So, ma'am, what happened that time? You were diagnosed with during the pregnancy. You were diagnosed with the thyroidism. So, Yes, yes. after the pregnancy, your thyroid was corrected or not corrected? Yes, ma'am, corrected. TSH Corrected. levels were normal. Before, at least 6 months before she was born itself, it became normal, ma'am. Your pregnancy was operation or normal delivery? It was Normal delivery only, ma'am. So she's your first child. Yes, ma'am, only child. Any abortion history? No, ma'am. No, ma'am. No. Any oral pills history? No, ma'am. Irregular of menstruations during your That was before all this time before delivery. Before Means before pregnancy, है ना? I was asking when you were unmarried. That time I am asking. Yes, ma'am. I did have irregular cycles, ma'am. Irregular cycles since menarche? Yes, ma'am. Yes. So tell me the properly how many days it was, and it will range from 25 days to 40 days, ma'am. And it was irregular. It was not regularly a particular period was not there. It ranged from 25 days to 40 days, and for 3 days, maximum 3 days. And what was the bleeding pattern? It was heavy or it was scanty? Not heavy, not scanty, medium, ma'am. So, ma'am, how many pads you were using that time? Per day 3, ma'am. Per day 3. Okay. Yes, so any time means during your adulthood or after marriage, this consistency was that using of 3 pads was always remain same or it will change? After resuming my periods after delivery, it was 6 months after delivery, and it reduced to 1 day or 2 days. Okay, ma'am. Just I want to ask, before marriage, you have taken any medications about oral pills to regulate your periods? No, ma'am. I've never taken in my life. No contraceptives ever used. Okay. Any home remedies? Any Ayurvedic treatment? Something else? 2 years after menarche, I was taken to an Ayurvedic practitioner, and he had given some lay gear for regularizing periods, ma'am. But it didn't work, and then I defaulted that treatment. Okay, so ma'am, before asking your child, I want to take your history also. Okay, sure, ma'am. Because you were the thyroid positive during the pregnancy, no? So she have, I think it's my opinion, she has means acquired this disease maybe due to your improper diet or improper living pattern. So that's why I am asking. No problem. Yes, is tell your about what you taken in your diet, or what was your daily routine from the adulthood or after that till the pregnancy? I was a very poor eater, ma'am. Very poor eater. On months together, I have lived only on banana for lunch.
Why? Because my work pattern was like that. I didn't have time to go and have lunch. You felt hungry or not that time when you got that time? If whenever I'm hungry, I used to eat a banana. That's it. Your appetite was good or not that time? My appetite was good. Morning and night I will eat properly, but But you suppress your eat that time, na? yes, ma'am. Or any history of retention of urine while you are doing work? So that time you felt you are urging, but you can't go. So it's Yes, your history. many times. Yes. Yes. So motion वगैरह and the urine वगैरह also है ना? Yes, So, yeah, ma'am. this Both. is your history totally मिला जुला करके कि आप motion and urine and appetite you all suppressed that time, है ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. So your what is doing your husband? What are doing? My He- husband is an orthopedic doctor, ma'am. Acha, orthopedic doctor. So after marriage, your life was continue in that that life. है ना? Because all are the doctor or this hustle bustle timings of the full. It's okay now. And so you conceived normally or you have taken any medication? No, ma'am. I conceived normally after 3 months of marriage. So after 3 months of marriage, Yes, ma'am. without any medication, है ना? Without medication, ma'am. In your irregular period also, that was previously with okay. Yes, So you ma'am. didn't take medicine. Okay, luckily. And during the pregnancy, you caught with any kind of severity of any disease, except that I know today I came to know you have thyroid. Other than thyroid, nothing else, ma'am. The baby growth and whatever the chart होता है ना बच्चे का monthly wise, she was okay. She was okay. Just height. Actually, familial height is less only. Other than height, weight and head circumference has always been normal. No, height when she was born at that time, what was her weight? It was good, ma'am. 2.5. Her weight was 3.5, ma'am. 3.5 kg. So she was healthy. She cried. Well. Yes, After ma'am. the She cried. Yes. So your delivery held on the government hospital or private hospital? Private hospital, ma'am. Private. So no complication was there. Easily, smoothly, she comes out from. You know? Yes. Yes, ma'am. Okay, ma'am. So after that, after her birth, what you have taken? Means what kind of your diet was? It was a good nutritious diet, and in addition, like what nutritious? How you give said na parameters? It is a nutritious. It is not a nutritious. Okay. I used to have vegetables, fruits, rice, and additionally Zandu Satavarex I used to take, ma'am. For the production of milk. Yes, ma'am. So your milk was not sufficient that time for the baby? It was sufficient only, still just you were feeling I am not able to feed her, so I can produce more milk to feed her. Na? At that time you are thinking. It was actually forced by my parents. Okay, you are forced by your parents. Okay. So what was your diet? Basically, what you like that time when you were pregnant? When I was pregnant, my eating habits were bad because of gastritis, ma'am. Gastritis, and I had a lot of vomiting and gastritis, so I ate very poorly that time. Okay, tell me what you had. Means routinely तो आप खाना ले रहे होंगे ना आप? Routinely, I used to have only fruits and vegetables, not proper rice and roti and all, just fruits and vegetables. You didn't have proper food, है ना? Sometimes chapati sabji, sometimes dal chawal, sometimes rasam chawal, right, like that. Yes, ma'am. And it was in hustle bustle, फटाफट खाओ फिर निकल जाओ. Correct. Like but it's still good. After listening this, her weight,
it was good on this hustle life. Okay, no. I And had what about- I had gained only 6 kg throughout the pregnancy, but baby's weight was good. yes. Okay, and what you took more that time? What you liked that time more than she was in you? Oranges and paneer. Oranges is paneer. you took. Okay. Dahi? Curd? No, ma'am. और वो चटपटा salty कुछ ऐसा which No, you ma'am. like more? No, ma'am. No. Acha, after delivering, what she took which milk? Breast milk or dabba milk? She took breast milk till 3 years of age, ma'am. Totally. Yeah, totally 3 years. No, after 6 months we always say Exclusive feeding up to 6 months, ma'am. After that, she continued to feed along with taking other foods up to her 3 years of age. So what was the food that time after 6 months? After 6 months, it was only finger food for about 6 months, like sweet corn kernels, paneer fingers. All these was the fried item, paneer, finger. Not fried, ma'am, just steamed. Steamed. So how you cook that steamed fried finger, paneer finger? Paneer, How? paneer cut into pieces and it's steamed in an idli cooker. How I didn't taste it. First time I am listening. Okay, so how was it taste? Is she like? She had no other go, I think. Okay. And what you have given up? Other than this? Other than that, she didn't like rice at all. She didn't like anything sticky, like dal and all. She never ate. She always wanted only dry food. If she's eating rice, it had to be plain rice, not sticking to each other like that. So with the rice, any rasam, any kind of dal, na? No, ma'am. What she like in North Indian style, like dosa, idli, something which. Dosa and idli she never ate. She didn't like, but chapati she eats. Chapati with ghee. Chapati with ghee. So this your chapati in sense of कि वो पराठा type का ऊपर से oil sprinkle करके जो ना हम लोग size से folded and cooked. Yes. Okay, so what about the vegetables? Only potatoes, bread, carrots. What about the motion? See, motion regular it was? Regular daily one. So any stickiness or any kind of looseness? Which in between some 3-4 times over the past 3 years, she had green color stools for 10 days. I thought it was because of her teeth developing. Yes. On it. So after just I want to ask you, during the 6-month exclusive breastfeeding, what you had eat she developed this kind of problem? You remind your diet. For 6 months, she did not develop any problems in his tools, ma'am. For the first 6 months, there were no issues at all except for this breathing problem. No, just when she was delivered, that time she was normal. There was no issue about oxygen, about anything. Nothing was there. So after 1 month, suddenly she developed, na? Yes, ma'am. Yeah. So your breast milk was sufficient that time when she was taking. Okay. For the initial 1 month, I had problems with incorrect attachment. I had developed fissures and all. I had developed fissures and I was bleeding. And then the pediatrician gave an ointment and said it would be okay. And after 1 month, it was fine, ma'am. She had good feeding and her weight gain. She had fissures. She had fissures. So she. So I think the pediatrician has given also orally pills or orally some syrup. No, only the one. So that time her motion was tight when she developed fissure. No, ma'am. I had developed fissures. Actually, you had developed. So he gave in to you. Yes, ointment.
Okay, so that time your diet was regular or not regular? Means what we always give means after delivered ladies दूध वगैरह milk वगैरह जो हम देते हैं ना घी वगैरह देते हैं, you have All- taken or not? Yes, ma'am. You took the rest, you took rest or not? Yes, ma'am. How many months you take rest? 5 months I was not working, ma'am. Acha, 5 months. Other than any problem that time, fever or something else? In those 5 months, she didn't have any other issues. At 35 days of age, she had that problem. Then for 6 weeks, she was given oxygen nebulization, and then she was fine, ma'am. So say this problem was developed suddenly. Where are you staying now, ma'am? At which place? Kothur, ma'am. It's close to Bangalore. How is the weather there? How was the weather the time she was born? It was the month of which month was? June month. She was born in June month in Pondicherry. It was summer that time. And I stay in a place where we get only 3 months of summer throughout the year. It's really cold here in Hosur. She is born in June. She was born in June. So she is born in June, July. So there is any क्या बारिश का मौसम था क्या वहाँ पे? Rainy season it was there? No, ma'am, it was summer, but as soon as she was born, there was rain for 1 hour, and then it stopped. Okay, no problem. So Summer. after giving birth, only you have take care of her, or any other member also was taking care? My sister also taking care, ma'am. So what about her bath? Who was giving her? We were only giving, ma'am. Matlab, what kind of water? It was normal lukewarm water because there was summer, or it was chilled water? Lukewarm water. Full body massage वगैरह you were giving that time, na? No. Okay. Any kind of like जैसे नहीं हम लोग होते हैं च्यवनप्राश कुछ ऐसा एक रिचुअल्स कुछ होता है, कुछ स्वर्ण देते हैं ना चाटने के लिए, कुछ ऐसा कुछ आपने दिया क्या? When I in my childhood in Chyawanprash, during after her birth, I've only taken Satavarix, ma'am, nothing else. तो ठीक है. और any का इसका वो HB level वगैरह it was good that time when she was developed this breathlessness. Any kind of कोई chest में discomfort था क्या? X-ray वगैरह कुछ कराया होगा उन्होंने तो? She had that chest indrawing while breathing, ma'am. अच्छा. So she was admitted or not? She was not admitted, but every 8 hours the hospital was nearby. So every 8 hours we went and get nebulization for half an hour and came back. She was not admitted. Nebulization with what? Budocort वगैरह something else? No, ma'am, no medicine, only oxygen. Huh? What? Oxygen only, ma'am, no medicine. अच्छा नहीं nebulization with what they were prescribed? Oxygen, ma'am. Only oxygen, no oxygen. medicines. Actually I am not able to ये इधर आवाज और ना वो टूट रही है मेरे को. Anyway, ठीक है मैम. अभी फिर after that after how many days she got attack of this breathlessness? After that, मेरे को आवाज नहीं आ रही, किसी को आ रही हो तो आप लोग बताइएगा. मैम की आवाज नहीं आ रही मुझे. she didn't have any breathlessness at all, ma'am. She had only running nose, running nose throughout the day for almost every day. Night. Ma'am, running nose that you are speaking about, the running nose. At what the age she got running nose, and since for how many days? Every 2 months she will have it for 15 days, like that. अच्छा. अभी है क्या रनिंग नोज इनका? नहीं अभी नहीं है. ये क्या बीच में होता रहता है क्या? आवाज नहीं आ रही आपकी.
A running nose is there. Actually, they are taking medications for the same, अच्छा, for तो allergic rhinitis. Doctor has So, diagnosed as allergic rhinitis. अच्छा, so what are you taking precaution about that? What you are not giving diet due to the runny nose? कुछ ऐसा prescribe किया क्या डॉक्टर ने? Winter water and we were good for 1 month, 1 month continuously, and then she developed some burning sensation while urinating. So she stopped using tulsi water. Other than that, we didn't give anything. किसी को अगर मैम की आवाज आ रही है तो आप कंटिन्यू, मेरे को तो ब्रेक हो जा रही है, मैं प्रॉपर सुन नहीं पा रही। सर देखिए, आप आदित्य सर आप देखिए, बताइए ना, मुझे ब्रेक हो रही है, आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। हाँ बोलिए सर। So, what are the current medications going on? Currently only small trust, sir. Only that 2.5 ml per for the past The 1 2.5 ml. What? One is montelukast levocetirizine is going on. Then saline drops are going on. Then this mometazone nasal spray is going on. Is it? over 2 months over. Okay. So local steroids are given for 2 months. Then stop. So currently only saline and levocetirizine. Saline drops and levocetirizine. Okay. Ma'am, in your family, anyone is having this kind of problem? Yes, ma'am. I used to have frequent cold attacks when I was a child, and my brother had skin allergic eczema he had when he was a child. Even now he has dust allergy. The child's father also has history of allergy. She is having dust allergy. She also has dust. She plays in the dust. And about her father family? Father also has history of allergy when he was a child. Allergy for green gram dal. He used to develop skin allergy. Skin allergy. Okay. She also had skin allergy. Like if she used to wear polyester clothes, then she used to develop red rashes on her body. Okay. Okay. मैं मेरी तरफ से हो गया है, और अभी मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया बिकॉज मेरे ना पेशेंट आ गया। किसी वैद्य कोई प्लीज कंटिन्यू कर लीजिए, ठीक है? मेरी तरफ से तो अभी इतना हो गया है, आगे आप लोग कोई कंटिन्यू करिए प्लीज। आदित्य सर अभी आप देखिए, कंटिन्यू करिए ना, मेरे को जाना है अभी बीच में। And apart from it, any other events happened from the birth till now for the child? Sir, after 2 months of birth, she had symptoms of reflux. Like whatever she, after feeding, she used to vomit it out. So we used to make her lie down in an inclined position. So that happened after 2 months of birth. Roughly 35 day 35 she had the bronchiolitis, and after bronchiolitis this was the problem for 1 or 2 months. After that it settled down. Okay. Any other thing apart from it? No, sir. How is her hunger now? What she likes to eat? She doesn't like put the rice, roti, dal, and all. She doesn't like. She mostly. तुमने खा ली? हैं? हैं? Some specific fruits which she likes: orange, apple, strawberry, and then paneer also she eats. So paneer, fried paneer only. And then chips. She eats lots of potato chips, homemade. Okay, when she sleeps, then her nose closes down. The snoring sound comes. Now, after starting mometazone nasal spray, that snoring is not there, sir. Even after stopping. Okay, before the mometazone, the snoring was there. Okay. फाइन। अगर किसी वैद्य जनों को और कुछ पूछना तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं लीव कर रहा था। Hello, good evening, ma'am. You said one of your family member have skin allergy or something like that. Okay, so exactly, can you explain what is that?
lifting, scaling Yeah. his both legs fully. He like 10 years old. Ma'am, I can't hear your voice clearly. Can you please just adjust your mic and repeat it? So my brother was 10. Can you hear me now? Yeah, but still it's breaking. Your voice is still breaking. Yeah, just try again. When my brother was 10 years old, Okay. he developed scaling, exfoliating lesion of both the legs. And, he used to administer none of the lotions worked for him. Finally, after 6 years, the lesion for him. No, at the age of 10 years, he developed scaly lesions, and they used to, by itching, it used to get erode. And what else after that? You were not audible. 6 months, he lotions and skin applications were tried. Lotions. None of it worked. Finally, after 6 months of suffering, somebody recommended potassium permanganate, and that cleared the lesions. After that, he didn't Okay. So potassium permanganate was given orally or locally? Orally. Locally. 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 Okay. Okay, ma'am, now tell me one thing. Is that any kind of skin allergy you or your child got after delivery? I've not had, ma'am, but I had. What kind of that is? Child had red lesion, which was Aditya sir, I can't hear her clearly. Actually, your voice is breaking down. A child had red lesions after delivery. For how many days? not after delivery, 6 months or 1 year only. After exposure to some polyester clothes was wearing new dress without washing, and things like that only. Okay, so Okay, that at the was age of just minimal, right? That was just a minimal complaint. It wasn't just so serious, and it doesn't stay for some long time, right? Correct, ma'am. Okay. Okay. Although you are looking very healthy, but tell me one thing. Is there any episode when you lost your weight suddenly so much? Yes. After delivery? After delivery, I did have weight loss. After 2 years after she was born, I had weight loss of 7 kg. How much? Pardon me? 7, ma'am. Actually, I was my father passed away. So, because of that, I had lost 7 kg then in 3 months. Aditya sir, I couldn't hear her. Can you please? She lost 7 kgs in 3 months. Okay. After delivery, after means after which time? At what time? 7 kgs in 3 months. Oh, Hello. over 3 months. Over 3 months. 7 kgs. What was the trigger for it? 7 kgs. Whether it was after delivery or 1 or 2 years after that. My father passed away 8 months. Okay, that time. Okay. So father had passed away 8 months back. So during that time. Okay, so you were in some psychosomatic shock or something like that? I think I was depressed. Okay. So have you taken any medicine for that? No, ma'am. Okay, right. Any counseling or like something like that? No, ma'am, no. Okay. Okay, so during that time, how was your child's health, ma'am? She was very clingy towards me. Other than that, no other. Okay. So she was just hardly 1 year old, right? And
when you are having some episodes of depression, right? 3 years. ma'am. 3 years. 3 years. 3 years. Okay, 3 years. Okay, so how was her defecation habits there? Means stool and all, pooping habits? It was as usual. Okay. No, you said she was so cranky. So at that time, she was taking that her food and sleep and all was regular and normal. Hello. Difference. She's always very Aditya sir, I can't hear. Could you please just? During the time when the father passed away, that time how was her nature? How was her food habits? How were her defecation habits? Were they normal or they changed? as usual. As usual, no change. Okay. So is there any? You said, I think I couldn't hear you properly after some time. You said she developed fissure or what? Fissure? No, ma'am. You had fissure. Okay. Okay. After how many time of your delivery you developed fissure? No, ma'am. Developed fissure because of incorrect feeding, I think. Not. At what time during pregnancy you had developed or after? No, sir, during feeding. Feeding was During breast. Okay. Means after probably 6 to 7 months after delivery, right? No, ma'am. Fissure. Your voice is not audible. When was that event? Sir, not anal fissure. Nipple. Yeah, it is the nipple fissure. Nipple fissure. So Okay. incorrect feeding due to nipple fissure. Okay. So had she developed early teething or something like that? Regular. Okay, her teething period was regular. Okay. You said you have breastfeeding her since for 3 years, right? 3 years or 2 years? 3 years. 3 years. Okay. So during that time, you were giving her another food or only she was on breastfeeding? Some of it is taking other food also. Okay. At that time, you have used any powder milk or something like that, some Ferrex and Cerelac and all? No. Never. Okay, that's good. Okay. So nowadays, what is her chief complaint? Just tell me in brief. Running nose, sneezing. Running nose, sneezing, right? And frequent infection. Frequent infection, abdominal or chest? Nasal. Upper respiratory. Okay. 1 year since she's been to school. So after schooling started, she's having frequent infections. Okay. Okay, ma'am. Okay. Now from my side, it's done. If anyone wants to ask her about something, can proceed. Thank you. Thank you, ma'am. Sir, it is allergic rhinitis. So what kind of allergy she has basically of dust or something else? Not sure, ma'am. Not able to identify. You are not sure about it. What kind of allergy she has? Have you never observed? Is it because of dust or something else? She ate something else developed suddenly. You never observed like that? No, ma'am. Food associations I have not observed. Dust she has, and without dust also she has. Cold climate. In cold climate. Okay. And what are the basic symptoms she develops during that allergy? Means rhinitis? Sneezing, running nose, and snoring while sleeping. Cough. After about 1 hour of sleeping, she develops cough and wakes up. So sleep is poor. Okay. Because of cough. And defecation is normal.
Defecation is normal right now. And about hunger is right. Yes, she asks for food, ma'am. Okay. So, and I think it is written eye discharge also. She develops sometimes. It was only one time. Watery eye. The doctor said it is adenovirus infection of allergic rhinitis because at that time they were in school with adenovirus. Okay. So it may be because of school also, because kids develop communicable disease. Okay, so basically there is running nose and snoring and cough sometimes, right? And sneezing. Okay. Fever. Fever only during episodes of infection. It was about 3 times over the last 1.5 years. 3 times over last 1.5 years. Okay. It may be because of school also, now infection kids develop just because school also sometimes. Recently that foot mouth disease was also going there. Okay. Anything else you want to tell? Small or big thing we didn't ask like that. Anything else you want to add? Any small or big thing related to her? Smoke also causes the symptoms for her now. Her means her Excuse me, ma'am. Your child is playing outside for how many times in a day? Means sun exposure and all? Once a day only, ma'am. Once a day. Okay. For how many times? 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes? About 1 hour. 1 hour. Okay, that's good. Okay, fine. So during that time, she is not having such complaint. Means after playing with sand or playing in dust, she is not having such complaint of running nose and all, right? No, ma'am. Okay. So most probably when you notice that this problem has been occur after schooling, right? Yes. Okay. So have you asked her teacher about if anyone from her friend circle or school has developed such kind of chronic allergy or rhinitis or something like that? Her kids friends have had multiple episodes of fever and lot of allergy. No, ma'am. Okay. And she is going from van or school bus, or what is the mode of transportation? Walkable only, ma'am. She goes by walk. Okay. And So during what that kind of period, place? she is facing some pollution or dust exposure or something like that? No, ma'am. No, ma'am. Okay. Yeah, ma'am. Tell me. जो भी पूछना What था, kind please of place continue. it is? What kind of place it is where she used to play? Like, is there dust or something else? Ground, playground? What kind of place it is? Or smooth or artificial? Uh, uh, long. Sorry. I couldn't hear. Sand and Your lawn. voice. Sand. Okay. Then she doesn't develop allergy with that, no? With sand, it's No, ma'am. no problem. Okay. Ma'am, she is taking homemade food to school, or you are the brunch is providing from school? Homemade food. Homemade. Okay. So most probably you are not using any artificial color or preservative in your food, right? Okay. Yeah. And how many times it been episodes of outside eating? Maybe once a month. Okay. Once in 2 months. Okay. So she is not having such any kind of food allergy or right? No, ma'am. I don't. आशा मैम एक पेशेंट और है, जरा जल्दी कराइए आप. Okay. From my side, it's okay.
we can discuss with who is his doctor. Yeah, Doctor? Dr. Aditya. Dr. Okay, Aditya. Okay, so for further treatment part, ma'am, we can discuss with Dr. Aditya. Okay. She Yeah, had you can leave now. German measles when she was 2 years old. Yeah. Medications were given. In 3 days, it subsided on its. Okay, it's normal. Yeah. Chickenpox, measles, all episodes have been done, right? You have taken Yes, ma'am. vaccination. Okay. Thank you so much, ma'am. Okay, you can leave. I'll update him. Thank you, sir. ठीक है, अभी प्रशांत भट्ट जी आप लाइए अपने पेशेंट को। नाम क्या है उनका? हाँ सर, पूजा लोधी नाम से है इनका। ठीक है, पूजा जी कृपया वीडियो ऑडियो ऑन करिए। पूजा जी। सर मैं पूजा लोधी। हाँ, वीडियो ऑडियो ऑन करिए। इनका केस टेकिंग कौन करेगा? वीडियो हाँ सर, थोड़ा सा मैं केस ब्रीफ कर देता हूँ पहले। हाँ कर दीजिए। और किससे केस टेकिंग कराना है आप बताइए। सर, जो कम समय में अच्छे हेतु निकाल दे। तो इसमें तो सबसे इंटेलिजेंट कौन है? सुनीता मैम कर सकती है बहुत अच्छा। हाँ, तो सर क्या इनका जी आप बताइए सर, बताइए। इनका नाम पूजा लोधी है और ये करीबन 2.5 साल से इनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है और इसके लिए इन्होंने काफी हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी दिखाया। तो उसमें कुछ दिन जब ये दवाई खाती हैं तब तक तो ठीक रहती हैं और फिर वो उनको फिर से कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाता है। अच्छा, इसके लिए इन्होंने आयुर्वेद में भी काफी दवाइयां डॉक्टरों से लेके मतलब दवाइयां लेके खाई हैं। और जब मेरे पास आई थी तो मैंने भी इनके लिए इनके काफी हेतु निकाले थे उस समय। अब मुझे अभी भी ज्यादा हेतु याद, इनका फाइल मेरे पास है नहीं अभी। तो अभी मैंने इनको देखा, मतलब जो उनके हेतु थे उसमें पानी बहुत ज्यादा पीती थी ये, रूक्ष आहार, रात्रि जागरण, वेग धारण, दिन में सोना और तनाव, मानसिक तनाव, बिना भूखे भोजन करना, फिजिकल एक्टिविटी 0, ये सब चीजें मैंने उस समय इनकी देखी थी। तो उसके लिए मैंने इनका पंचकर्म प्लान किया था हेतु सेवन बंद करा के। तो ये करीबन इनका 15 डेज का इनको वस्ती चिकित्सा दी गई थी, जिसमें इनको करीबन 7 डेज इनके लिए ऑयल वाला वस्ती, 7 to 8 डेज, और उसके बाद अल्टरनेट इनको निरुवस्ती और अनुवासन वस्ती का पूरा एक एपिसोड 15 डेज का दिया गया था। और इसके साथ साथ में इनको दीपन पाचन दवाइयां भी लेती रही काफी समय तक। तो उस समय जो मतलब दवाइयां दी थी और जो वस्ती हुआ था उससे इनको आराम था और इनका मल प्रवृत्ति उनकी शुरू हो गई थी और उनको मल प्रॉपर आता था। लेकिन ये हमेशा बोलती थी कि मुझे जो मल आता है तो मुझे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो 15 डेज करने के बाद फिर इसको घर पे ही इसको मात्रावस्थी के रूप में इसको ऑयल दिया गया और करीबन इसने 3 लीटर तेल घर पे ही मात्रावस्थी के रूप में ये लेती रही। तो जब भी ऑयल की वस्ती करती थी तो इसको मल आता था और जैसे ही कभी नहीं कर पाती थी। एक्चुअली क्या थे कि ये काफी इनरेगुलर रही मेरे पास, जब भी आती थी तो 10 दिन 12 दिन की दवाई ले गई, फिर 15 दिन 20 दिन नहीं आती थी। तो कुछ मतलब ऐसा रहा कि ट्रीटमेंट भी बिल्कुल कंटिन्यूशन में नहीं हो पाया। तो उसमें थोड़ा सा हमें भी लगा कि यार ये मतलब कंटिन्यूशन में नहीं ले पा रही, तो फिर अपन क्या मतलब इसका निष्कर्ष निकालें। तो अभी जैसे इसको फिर से भी ये मेरे पास आई थी तो मैंने इसको फिर से वही दवाई है और मात्रावस्थी इसकी अभी भी कंटिन्यू है। दवाइयों में ये आम पाचक बटी 10-10 गोली सुबह शाम खाती है, आरोग्यवर्धिनी बटी खाती है, शंख बटी लेती है, रसपाचक ले रही है और दाक्षा 100, कुमारिया 100, आपका पुनर्नवा 100, इस टाइप की दवाइयां इसको बदल बदल के दी जा रही हैं। करीबन 3 महीने से ये करीबन 9-10 किलो के आसपास घी का सेवन कर चुकी है। करीबन 100 ग्राम घी 3 महीने से खा रही है। तो अब यही था कि मतलब ठीक नहीं हो रही इसके बाद भी, तो थोड़ा सा अपन डिस्कस करें कि इसमें और क्या हेतु जो शायद हम नहीं पकड़ पाए तो सामने आ जाए अपने। जी सर। हेलो। हाँ, आप किससे केस टेकिंग कराना चाहेंगे? अर्शिया मैम एकदम फास्ट करती हैं, हेतु निकलती हैं, या अर्चना मैम? अर्शिया मैम आप करेंगी केस टेकिंग? अर्शिया मैम शायद चली गई। सर मेरे इधर शोर है फिलहाल।
कोई बात नहीं। अर्चना मैम आप करेंगी जल्दी जल्दी केस टेकिंग? नहीं। फिर कोई और करिए। आशा मैम आप करेंगी जल्दी जल्दी केस टेकिंग करना है? सबसे इंटेलिजेंट तो शशि मैम है। हाँ हाँ बोलिए। सर। सर जल्दी जल्दी में तो जैसे प्रशांत सर ने बताया, वैसे ब्रीफ हिस्ट्री लेने के बाद ज्यादा कुछ पूछने के लिए लायक है नहीं, फिर भी मैं थोड़ा अपनी तरफ से ट्राई करती हूँ। नमस्ते पूजा मैम। क्या? नमस्ते मैम। हाँ, आप क्या पढ़ाई करती हैं, जॉब करती हैं, क्या करती हैं? नहीं, मैं पढ़ाई करती हूँ। अच्छा, क्या पढ़ाई कर रही हैं अभी? मैं प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। अच्छा, आपकी एज कितनी है मैम? 23। 23 ईयर्स। अच्छा। यस। तो आप कितने टाइम से, मतलब आपको कॉन्स्टिपेशन के लिए आपने जहाँ कहीं भी मेडिसिन ली है तो उन्होंने कभी आपका सोनोग्राफी वगैरह कराया है क्या? हाँ मैम, मेरा सोनोग्राफी भी हो गया है और ये ब्लड टेस्ट वगैरह और कोलोनोस्कोपी भी हो गया है। अच्छा, तो कोलोनोस्कोपी में उन्होंने क्या बताया आपको? कुछ भी नहीं निकला था, वो नॉर्मल ही थी। सब नॉर्मल आया है? हाँ। ओके। अच्छा, एक बात बताइए, आप जब वॉशरूम जाती हैं तो गैस वगैरह पास होती है आपको? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। अच्छा, आपने जब खाना खा लिया तो उसके बाद आपको पेट में भारीपन वगैरह लगता है कि नहीं, बस अब और ज्यादा नहीं खाया जाएगा, ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता है। मतलब मेरा फिक्स है कि जितना भूख लगी ना उतना ही खाना है, पर एक्स्ट्रा खाती भी नहीं हूँ। कितने बजे खाते हैं आप? पहले तो मेरा टाइम फिक्स था कि मैं 8:30 से 9 के बीच में खा लेती थी, बट सर के बाद सर ने बताया कि जब भी भूख लगे ना तभी खाना खाना है, तो जी। फिर मैं जब भूख लगती तभी खाती हूँ। तो ये तो मतलब आप अभी का बता रही है ना, अभी कितने टाइम से आप सर के पास ट्रीटमेंट ले रही है? अभी लगभग 1.5-2 महीने से तो ज्यादा हो गया है। अच्छा, तो उससे पहले आप कैसे, मतलब किस टाइम पे खाती थी? उससे पहले मैं 8:30-9 के बीच खा लेती थी। रात में या दिन में? दिन का बता। मतलब रात में 8:30-9 के बीच में और दिन में 11:30-12 के बीच खा लेती थी। अच्छा, और उठते साथ ही पानी पीने की या ऐसी कोई हैबिट है आपको? हाँ मैम, मैं 1 गिलास पानी पीती हूँ, थोड़ा सा गुनगुना करके उठने के बाद। हमेशा से पीती हैं या फिर ऐसे विंटर में ही पिया हो, ऐसा कुछ? नहीं मैम, मैं हमेशा इसे पीती हूँ। बारों में, मतलब पूरे साल पीती हैं हाँ हाँ। अच्छा, तो उसके बगैर आपको टॉयलेट होती नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, टॉयलेट तो हो जाती है, बट मैं मतलब पीती हूँ, मेरी हैबिट में ही आ गया है। अच्छा, आपको पीरियड की रिलेटेड कोई प्रॉब्लम वगैरह है क्या? नहीं, उससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं। हमेशा रेगुलर आता है दिन, मतलब हाँ। कभी आगे पीछे हुआ ऐसा कुछ? नहीं नहीं, रेगुलर ही रहता है। अच्छा, आपको कभी स्ट्रेस वगैरह रहता है क्या पढ़ाई से रिलेटेड? हाँ मैम, स्ट्रेस तो रहता है, मतलब। मतलब ऐसे चिंता, मतलब आपका स्ट्रेस लेने का स्वभाव है, ज्यादा कुछ भी छोटी छोटी बातों में भी आप स्ट्रेस ले लेते हो? हाँ मैम, ये तो लेती हूँ, बट तो जैसे एग्जाम वगैरह पास होता है ना तो फिर थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो उसमें रात में जगना, दिन में भी ऐसे कभी कभी सो लिया, ऐसा कुछ हो जाता है? हाँ मैम, बट रात में तो मोस्टली कम ही जगती हूँ। अच्छा, दिन में सोना वगैरह होता है? हाँ, दिन में पहले सोते थे लगभग आधे से 1 घंटे, बट फिर सर के बाद, सर से ट्रीटमेंट लेने के बाद फिर बंद कर दिया था सोना। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप खाने में ड्राई ज्यादा खाती हैं या फिर रसेदार सब्जियां फल वगैरह ज्यादा लेती हैं? नहीं मैम, फल तो मैं खाती हूँ, और रसेदार सब्जियां और ड्राई दोनों, मतलब सूखा और मतलब वो दोनों लेती हूँ। आपका वेट कितना है अभी? अभी मेरा 52-51 है। हाँ। और हाइट? हाइट मेरी 5.5। अच्छा, तो ये कांस्टेंट है आपका, स्टेबल है वेट, या कभी बीच में बढ़ गया घट गया ऐसा कुछ? एक्चुअली मैम, लॉकडाउन के टाइम पे मेरा बढ़ गया था, लगभग 60 के हम्म। आसपास हो गया था, तो फिर मैंने एक्सरसाइज वगैरह करके वेट लूज किया था। अच्छा, सिर्फ एक्सरसाइज किया था या फिर क्रैश डाइटिंग या ऐसा कुछ स्पेशल डाइट नहीं नहीं, डाइटिंग नहीं वगैरह? की थी, ओनली एक्सरसाइज की थी बस। हाँ, सही में बताइएगा, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम काफी लोगों ने ऐसा बहुत कुछ यूट्यूब पे देख के ना यहाँ वहां से नहीं नहीं मैम, एक्चुअली मैं रियली बता रही हूँ, 60 मतलब हो गया था, तो मैंने बहुत एक्सरसाइज ही की थी, ओके। और खाने घी, का नहीं किया था कुछ भी। घी वगैरह लेती हैं आप? हाँ, घी तो मैं पर डे लगभग 20 चम्मच अभी ले रही हूँ। अच्छा, जीभ दिखाइए अपनी जरा। कोटेड है, आम है। ओके, ठीक है। नींद ठीक से आती है मैम आपको, या कभी ऐसे होता है कि नहीं, बीच में से दिन रात में कभी 2-3 बार जगना पड़ता है, ऐसा कुछ?
नहीं नहीं मैम, नींद तो सही आती है, बट जैसे रात में यदि वॉशरूम में पानी वगैरह पीने के लिए तो फिर उठ जाती हूँ। यूरिन में कभी इन्फेक्शन, जलन ऐसा कुछ? नहीं नहीं। अच्छा, ठीक है। और कोई स्किन इन्फेक्शन वगैरह कुछ हुआ था? नहीं मैम, मुझे इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है। ओके, अच्छा ठीक है। अच्छा, आपको पेट में कभी ऐसा लगा कि उमड़ उमड़ के, मतलब ऐसे नहीं बोलते हैं कि आंतों में जैसे मरोड़ जैसा आ रहा है, वैसा करके कभी हुआ क्या? नहीं मैम, ऐसा तो नहीं हुआ। ठीक। बट मैम यही था कि मेरा जो पहले जैसे 1-2 दिन नहीं होता था, तो मैं ये पेट सपा और ये त्रिफला वगैरह खा लेती थी। लगभग कितने मैंने साल 1 तक आध आपने महीने तक लिया ये ऐसा? खाया था। अच्छा, 1 क्या मैम? महीने तक कंटिन्यू? हाँ, मतलब कंटिन्यू नहीं, जैसे अल्टरनेट में खाती थी। ऑल्टरनेट में? तो उसके बगैर आपको होता ही नहीं था ऐसा डेफिकेशन? हाँ ऐसा ही है, मतलब पहले ना 1-2 दिन में होता था, तो फिर मैं खा लेती थी उसमें अल्टरनेटनेट में, और फिर अचानक से मतलब ऐसा ही हो गया कि वो होता ही नहीं था बिना दवाइयों के। कुछ भी दवाई और लो तभी, फिर मैंने हॉस्पिटल वगैरह दिखाया। कितनी मात्रा में लेती थी मैम ये पेट सफा या कायम चूर्ण या जो भी त्रिफला चूर्ण आप लेती थी वो? 1 चम्मच। अच्छा, हाँ। ठीक है मैम। तो ये ना मुझे लग रहा है कि आपको उसकी हैबिट हो गई है, तो उसकी वजह से आपकी आंतों में ये तकलीफ हुई है। ठीक है, तो ये ठीक है सर, जैसे बता रहे हैं ना वैसे मात्रा बस्ती वगैरह तो लीजिए, और साथ में थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट हम लोग आपको सजेस्ट कर देंगे सर के साथ डिस्कस करके। ठीक है, ओके। और आप कभी पेशाब या टॉयलेट का जैसे आया, कहीं आप बाहर हो तो रोकना पड़ा, ऐसा कुछ है क्या मैम, या तुरंत तुरंत जाते हो? नहीं मैं तुरंत ही जाती हूँ, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ओके, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, हम आपको बताते हैं ट्रीटमेंट के बारे में आपके डॉक्टर से डिस्कस करके। और किसी को कुछ पूछना हो वैद्य को तो प्लीज पूछ लीजिए, मेरी तरफ से हो गया है। ठीक है, तो फिर इनको लीव करा देते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम। पूजा मैम, आप लीव कर दीजिए प्लीज। तो प्रशांत भट्ट जी, इनको आप ट्रीटमेंट क्या देंगे? सर इनको तो एक्चुअली क्या है सर, बस एक समस्या ये आ रही है कि ये लड़की रेगुलर नहीं आती है। कि ये 10 दिन की दवाई लेके जाती है, 10 दिन का ऑयल लेके जाती है, 15 दिन के लिए गायब हो जाती है। तो 10, 12, 13 दिन ये अपना वस्ती लेती है घर पे, और जब जहाँ 2, 4, 5 दिन और मतलब इसके गैप होके 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आती है, जब इसका कॉन्स्टिपेशन फिर शुरू हो जाता है। तो ये थोड़ी समस्या है इसकी कि ये रेगुलर नहीं है ये बच्ची। और लेकिन हमने भी मतलब इतने पेशेंट में देखता हूँ तो ऐसा कॉन्स्टिपेशन मैंने भी पहली बार देखा कि ये करीबन समझ लो कि इसको 3, 4, 4, 4.5 लीटर मैं इसको ऑयल दे चुका हूँ मात्रा बस्ती में, और ये करीबन 8-9 किलो घी खा चुकी है। और दवाई भी, ये आमपाचक बटी है, आरोग्यवर्धिनी बटी है, शंख बटी है, अग्निटुंडी बटी है, दाक्षा 100 है, कुमारिया 100 है, एमडीक्योर डीएस है, झंडू पंचारिस्ट, मतलब इसको चेंज कर करके दे रहे हैं दवाइयाँ। पर ये इसकी रिकवरी उतनी अच्छी नहीं आ रही है अभी भी। और हेतु सेवन भी सारे बंद करा के रखे हैं, और जब भी आती है तो हम इस पे जरूर डिस्कस करते हैं इसके हेतुओं पे। मेरे हिसाब से तो आपको बीच में, बस्ती और देना पड़ेगा सर, तेल का बस्ती और देना पड़ेगा, अभी भी रुक्षता कम नहीं हुआ है। हाँ तो सर वो, लेकिन वो तो मैं तैयार हूँ देने के लिए, लेकिन वो हाँ, रेगुलर नहीं है थोड़ा सा। वो रेगुलर देना पड़ेगा आपको, उनको समझा दीजिए, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगा। बाद में वो दूसरे से भी मतलब बाद सर में क्या फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं ना कहीं अपान दृष्टि है तो बाद में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उनको कंटिन्यू मात्रा बस्ती का इम्पोर्टेंस बताइए। ठीक है सर, ठीक है, मैं देता हूँ कंटिन्यू। इनका फोटो बना के बताइए कि लार्ज इंटेस्टाइन पूरा ड्राई हो गया है आपका, तो पूरा सॉफ्ट जी बना जी जी, वो मैंने बताया था उनको, बताया था। प्रशांत सर, आई तो सजेस्ट कि एक बार ना आप फल घृत की उनको बस्ती दिलाइए, फल घृत के साथ शतावरी घृत मिक्स करके, और 3 दिन फल घृत शतावरी घृत, और चौथे दिन ना दशमूल तेल। ये बस्ती आप योग बस्ती या काल बस्ती के स्वरूप में दीजिए। आई थिंक इससे उनकी ड्राइनेस कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रस वह स्रोतस और मल वह स्रोतस दोनों की दृष्टि है, और जैसे सर ने बताया कि अपान वायु की संगति हुई है, तो ये उसमें बढ़िया काम करेगा। और थोड़ा उनको ना एनीमिक भी मुझे लग रही थी, वो चाहे बताए नहीं बताए,
तो उसमें सर आप पुनर्नवा मंडूर या फिर ऐसा कोई योग शुरू कराइए उन्हें, तो ये शायद उसमें प्रोटोकॉल में ये ऐड करना बेनिफिशियल रहेगा। जी सर। सर सुबह का पानी का भी बंद करवा दीजिए, वो जो सुबह उठ के जो पानी पीती है ना, नहीं बंद करा गरम दिया, ठंडा जो। वो करीबन 5-6 लीटर पानी पीती थी पहले, तो वो सब तो हाँ बंद करा दिया पूरा, तो 2 लीटर 1.5 लीटर के आसपास पीती है पानी। अच्छा सर, उसमें मानसिक आपने कुछ ऐड किया है क्या? हाँ, इसने मानस मित्र रोटी खाती है। अच्छा सर तो कृमि सारस्वता ऋषि ब्राह्मण। हाँ नहीं, चेंज कर करके ब्राह्मी बटी, मानस मित्र बटी ऐसे चेंज कर करके दे रहा हूँ। कृमि चिकित्सा अच्छा। दिया है सर? हाँ, कृमि के लिए भी इसको 21 डेज का कृमि कुठा रस दिया था। सर खाना डाइटिंग हो रही है कुछ, क्योंकि एनेमिक भी है बहुत ज्यादा, मतलब वीक भी लग रहे हैं। नहीं, ये अभी जब हमारे पास आई थी ना तो उसका वेट करीबन 47-48 kg था, तो मात्रा वृद्धि से ये फायदा हुआ कि इसका वेट बढ़ गया, करीबन 2-2.5 किलो इसका वेट गेन हुआ है। कोई लोग भी सर शाम को सिर्फ मतलब सूप पी लेते हैं, बहुत कम खाते हैं, तो भी मतलब बहुत कम क्वांटिटी में तैयार होता है। उससे भी उसने मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में ये बिठा लिया है ना कि हमें पोटी नहीं हो रही है, तो तो उस चीज को हमने उसको मल का जो है ना क्वांटिटी, वो भी बहुत कम हो गई है, मुझे लगता है, क्योंकि इतना तो ड्राइनेस में होगा, इतना सारा घी भी दिया, इतना सारा ऑयल भी दिया, डॉक्टर प्रशांत, मल की क्वांटिटी कम हो सकती है। आरोग्यवर्धिनी पानी से ले रही, दूध से ले रही? आरोग्यवर्धिनी बटी खा रही है, ये दूध से ले रही है। दूध क्या डॉक्टर साहब, एक मिनट दूध बंद करके देखिएगा, क्योंकि दूध एक आम बनाता है कई पेशेंट को, तो उससे कॉन्स्टिपेशन का क्लियर नहीं होता। हाँ नहीं, अभी दूध से नहीं, अभी दिया था मैंने 5 दिन का दवाई, बाकी तो पानी से ही दे रही है 2.5 महीने से। नहीं डॉक्टर साहब, रेगुलर दूध लियो ना बीच में, तो दूध इसका बिल्कुल बंद कर देना कि आप दूध या दूध से बना कोई पदार्थ मत ली। अच्छा तो जी, ठीक है। क्योंकि मेरे पास डॉक्टर साहब एक पेशेंट से चल रहा था, तो मुझे हेतु उसका यही मिला, और मैंने उसके जैसे दूध बंद किया तो उसका क्लियर हो गया उसका। ठीक है ना, अपन बंद कर देंगे जी। हाँ जैसे एक बार करके दे। जी 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 ओके। सर वो आगे वाली जो बच्ची का था, उनका भी थोड़ा केस और डिस्कस कर ले, ट्रीटमेंट। उससे तो स्वर्ण चालू कराइए आप लोग कंटिन्यू, है ना, उसको स्वर्ण दो आप लोग, और मैं तो बोलता हूँ महीने में 2 बार खिलाओ, एक पुष्प नक्षत्र के दिन और एक 15 डेज बाद फिर से उसको रिपीट करें, तो उसका इम्यूनिटी बूस्ट होगा, तो सब ठीक हो जाएगा। एंड आई थिंक सर उसमें थोड़ा श्रृंग पुष्कर वाला योग भी चलाना चाहिए, क्योंकि जैसे बता रहे हैं ना कि उनमें प्राणवायु स्रोत की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं बच्ची को वहां पे अंदर लंग्स में भी ब्रोंकियोल्स वगैरह में ड्राइनेस होगी, तो मुझे लगता है कि वासा उले और ये सब भी उनको देना चाहिए, अगर से हरितकी या ऐसा कुछ भी रेगुलर बेसिस पे। स्वर्ण इज वेरी गुड, बट इसके साथ कुमार कल्याण रस अच्छा रहेगा उसके लिए, कुमार कल्याण रस हो गया, है ना, अरविंदासो हो गया, इस टाइप की कुमारी आसो नंबर 3 हो गया, ठीक हो जाएगी। सर जो रेजिस्टेंट कॉन्स्टिपेशंस होते हैं, जो किसी चीज को रिस्पॉन्ड नहीं करते सर, जैसे कोलोन कैंसर का कॉन्स्टिपेशन, 6 महीने से पेशेंट ने मोशन नहीं किया अच्छे से, या और वो लाइफ लॉन्ग हिस्ट्री, तो मैंने उसमें सर थोड़ा सा सोशली अनएक्सेप्टेबल है, लेकिन शिवाम्बू में जब अगर हम त्रिफला या एरंड का तेल मिलाते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे एरंड का तेल क्योंकि रुक्षता है और शिवाम्बू वातनाशक रहता है, तो शिवाम्बू के साथ अगर आप एरंड का तेल देते हैं या गंधर्वस्था एरंड का कैप्सूल ऐड करते हैं तो सर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और सर ये लंग्स में भी जो प्रॉब्लम आती है उसमें भी काम करता है, जैसे रुक्षता को डीप डाउन वो खत्म करता है। और अदरवाइज सुकुमार घृत आता है, उसमें दशमूल का कॉम्बिनेशन घी और कोटकल आर्यवैद्यशाला का आता है सर, उसका भी अच्छा रिस्पॉन्स। लेकिन दोनों का एक्शन अलग है सर, क्योंकि रुक्षता है तो दोनों का काम रहेगा इसमें, ये सजेशन था। हाँ डॉक्टर साहब, एरंड तेल का यूज करो आप साथ में ना, वो काफी अच्छा रहेगा, तेल का कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है वो।
हेलो, हाँ सर नहीं है क्या शायद? अरविंद सर? आशा मैम, मुझे एक पूछना था क्वेश्चन। हेलो हाँ मैम। बोलिए मैम बोलिए। मेरी विपादिका की एक पेशेंट है मैम, मैंने डाला था पिक्चर वो एक ग्रुप पे, वो हाथों पे थोड़े स्क्रैचेस है उनको, तो ओके उनको मैंने दीपन पाचन करके ये दिया है, महातिक्त स्टार्ट किया, अभी जी विरेचन वगैरह स्टार्ट करना है, लेकिन वो हम्म। बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा मुझे बर्निंग हो रहा है, तो अभी मैम पेशेंट फिलहाल की प्रकृति क्या है पहले वो देखिए ना। मैम पित्त ही है उन लोगों की। हाँ तो फिर आप पित्त है और अभी समर भी है ना, तो हाँ इसमें क्या रहेगा मैम, अगर आप पित्त निहरण के लिए भी करा रही है ना हाँ विरेचन, तो वो कहीं ना कहीं जाके उसमें उष्णता बढ़ा रहा है, ठीक है। तो यस विचर्चिका विपादिका वगैरह में ना हमेशा पहले स्नेहन कराइए, और कहीं ना कहीं जाके उसको शमन स्नेहन कराने के बाद ये थोड़ा गर्मी कम हो जाए ना, बाद में मैम आप उनको विरेचन कराइए, तो वो काफी बढ़िया रिजल्ट देगा, है ना। यस जैसे आप शमन में क्या चलाने का सोच रही हैं अभी? यस मैम। शमन में आप क्या चलाने का सोच रही हैं अविरेचन के बाद? अभी विरेचन स्टार्ट ही नहीं किया मैम, सिर्फ दीपन पाचन अनुलोमन दिया, अच्छा अभी दीपन महातिक्त पाचन दिया है, वो कल से स्टार्ट करने वाले हैं। मुझे क्या ये दिया चाहिए दीपन था कि पाचन के लिए? लोकल आप लोकल कम करने के लिए क्या कर सकते हैं हम बर्निंग के लिए? दीपन पाचन के लिए क्या दिया मैम आपने? दीपन पाचन के लिए मैम मैंने यही दिया, आम पाचकोटी दिया, प्रवर पंचामृत दिया, हम्म और ये दिया था एरंड वृष्टि दिया था। ओके कोई बात नहीं मैम, आप सब्जेक्ट लगा दीजिए ना, उनको लगाने के लिए वो बोलिए। दिया मैम, गोग्रुप भी दिया, कैलाजियम भी दिया, शतावरी ग्रुप भी दिया, तो भी वो बोल रहे हैं मुझे तो बर्निंग हो रहा है, बर्निंग हो रहा है। तो मैम पथ्य का पालन नहीं हो रहा है या उसकी वजह से ड्राइनेस बढ़ रही है, दाह बढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं है ना? यस मैम। आप मैम अभी हेतु आम निकाल के पाचक वटी या देखिए। तो फिर आप तक्र से हाँ दीजिए, या फिर तक्र आम से पाचक वटी दीजिए, बंद कर दीजिए। आम पाचक हाँ, वटी या से तो भी बंद कर कई दीजिए बार या फिर तक्र से रक्तचाप और दीजिए। दाह बढ़ता है। ओके मैम, यस उसकी मैम, जगह दाढ़ी माश तक कर दीजिए और उसको यस। ताड़ीम खाने को बोलिए। लोकली मैम बर्निंग कम करने के लिए क्या लगा सकते हैं हम? गोघृत वगैरह बताया मैंने, शतदूत भी तिक्त दिया था, तिक्त घृत, महातिक्त घृत। तिक्त घृत करवा। हाँ, या प्लेन तिक्त घृत लगवाया प्लेन क्या बोला आपने? मैंने, तिक्त घृत बोला प्लेन, और ये मैम भी इसमें बोला। एमटीजी महातिक्त घृतम लगा भी सकते हैं, कैलाश शिवन इसमें आप विरेचना कराएंगी ना एमटीजी से तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, मैंने देखा है। एमटीजी महातिक्त हाँ, इसको आप अप्लाई भी कर सकते हो आप उस जगह पे ना, या अच्छा कैलाश अच्छा। जीवन भी आप लगाइए, उसको थोड़ा सा कैलाश हल्का। जीवन कैलाश किया जीवन भी अच्छा मैंने, और रहता है। प्लेन घृत से लोकल एप्लीकेशन के बोला उनको। मैंने देखा है वैपादिका के केस में बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं विरेचना के बाद मैम पूरा। शमन के लिए क्या दिया था मैम आपने फिर उनको? शमन के लिए तो फिर बाद में कुष्ठ रोग अधिकार वाले जो भी मेडिसिन है वैसा आप दे दीजिएगा, बट एक बार शोधन कराएंगे तो उसी से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैम मैंने विरेचन और बस्ती का सोचा है इनमें, तो आप क्या वमन करना ही पड़ेगा या नहीं किया तो भी चलेगा? क्या लगता है आपको? विरेचन करा के देखिए, तब उसके बाद देखिएगा आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे इसमें। विरेचन से ना, हाँ हाँ क्योंकि मुझे स्किन डिसीज में अच्छे रिजल्ट मिलते हैं विरेचन के बाद, हाँ, तो मैंने अच्छे विरेचन मिलेंगे, को। उसके बाद शमन औषधि का आप देखिएगा, यस है मैम, यस यस मैम, यस। बाद में देने वाली हूँ, इसलिए मैंने ना। पूछा नहीं ग्रुप में। नहीं मैम जी विरेचन आप जरूर कराइए, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जैसे अर्षा मैम ने बताया, आम पाचक वटी की वजह से या कहीं ना कहीं रुक्षता उनको बढ़ी है, हेतु सेवन या तो बंद नहीं हुआ है, अदरवाइज विरेचन से बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं, तो थोड़ा स्टॉप करा स्क्रैचेस के है ना फिर आप मैम, विरेचन। स्क्रैचेस में ये हो रहा है, बंद नहीं हो रहा है, स्क्रैचेस हुए ना बहुत ज्यादा। ज्यादा है ना, हाँ तो ये फॉलो एक दो सेशन में विरेचन में होगा ही, बाद में डिसाइड हो जाएगा। यस मैम, यस मैम। मानसिक हेतु भी है क्या उनको मैम? मानसिक नहीं है मैम कुछ ऐसा। नहीं पाउडर वगैरह में काम करना या ऐसा कुछ? नहीं, वो बार बार हाथ धोते हैं। हाँ तो मैम वो भी हेतु है, क्योंकि वो अगर बंद किया पहले दिन से बंद किया, पूरा बंद किया, अच्छा, स्मोकिंग आपके है पास उनका। कितने दिन से है पेशेंट मैम? क्या बोले मैम? कितने दिन से आ रही है पेशेंट आपके पास? पेशेंट अभी आ रहे हैं, 4-5 दिन ही हुए। हाँ तो मैम थोड़ा उनको बोलिए कि थोड़ा धीरज रखें, आराम हो जाएगा। ये प्रॉब्लम मैम, अभी जो सिर्फ टैबलेट दिया है 3-4 दिन का, और ग्रुथ आज दिया है, वो अभी स्टार्ट भी नहीं किया है। मुझे ग्रुथ से भी अच्छे मिले पेशेंट में, लेकिन नहीं वो नहीं ना अभी रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल रोज फोन करते हैं, बर्निंग है या ये एक। मैम ये ना स्किन डिसीज वाले पेशेंट थोड़े क्यूरियस होते ही हैं, तो वी हैव टू कंसोल देम। ऐसा लगे तो आप एक आध बार उनको शिरोधारा भी करा दीजिए, तो काफी बढ़िया रहेगा। शिरोधारा या शिरोपीचू बोल दीजिए, नाभि पूरण बता दीजिए, तो ये घृत से कहीं ना कहीं जाके किसी भी फॉर्म में, पादाभ्यंग है, शिरोधारा है, शिरोपीचू है, तो उस फॉर्म में जैसे घृत तेल वगैरह जाएगा ना, तो उससे उनका पित्त का शमन हो जाएगा, तो उनको धीरे धीरे राहत हो जाएगी। एप्लीकेशन के लिए भी दीजिए और इंटरनली भी दीजिए। जी यस मैम, मैम, यस मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम।
और मैम वो स्मोक कितना करते डेली? मैम वो बोले ज्यादा नहीं करते, 2 बार ही करते थे, लेकिन अभी तो पूरा बंद कर दिया, ऐसे वो बोल रहे हैं। अभी पता हेतु तो मैंने निकाले, स्मोकिंग था और रात्रि जागरण था, मतलब वो 2-3 घंटे ही सोते थे, वो भी उन्होंने बंद किया। अभी आज मैंने पूछा तो, क्योंकि उनकी वाइफ की भी बस्ती चल रही मेरे पास, तो उनसे भी मैं डिटेल हिस्ट्री ले रही हूँ 4-5 दिन से उनका। तो वो बोले कि जागरण भी बंद किया अभी, और भूख इतना मंद है कि उनको भूख ही नहीं लगती उस पेशेंट को। अच्छा, तो ये भी प्रॉब्लम ठीक है उनकी। अभी। हाँ, अब दाढ़ी मास्टक भी चला के देख सकते हो, देखो। यस मैम, यस मैम। तो हम्म, वो बोले कि लोकल मैम सिर्फ बर्निंग कम करने के लिए कुछ तो दे दीजिए, जैसे मतलब ऑइंटमेंट वगैरह लगाते हैं तो थोड़ा जल्दी मतलब ये हो जाता है, 1-2 दिनों के लिए, 4-5 दिनों के लिए। तो मैंने तो बाकी सब बता दिया, केला जीवन बता दिया, शतदूत दिया है, वो भी लगा रहे, जाते तेल भी लगा रहे ऊपर से, मतलब थोड़ा सा ये कम हो जाए। मैम उनको सारस्वतारिष्ट ऐसा कुछ दीजिए, क्योंकि थोड़ा ना एंजाइटी वगैरह भी डेवलप हुआ होगा। यस मैम, यही उनमें एंजाइटी है, लग रहा है थोड़ा सा। हाँ मैम, तो वो वो बार बार थोड़ा कॉल मानस चिकित्सा को आप थोड़ा प्रायोरिटी दीजिए उसके साथ साथ। मैम, मानस मित्र वटक भी स्टार्ट कर दिया क्या? और शोधन चिकित्सा भी, है ना मैम? अभी तो विरेचन दे रही हूँ ना मैं, बाद में करूँ कि अभी करूँ? मैम आप विरेचन के टाइम कोई भी शमन औषधि नहीं दे सकते ना अभी पेशेंट वही को। तो नहीं, अभी तो घी स्टार्ट नहीं किया है उन्होंने, कल तो से अभी करने में। यदि घृत लगाएंगी तो हो सकता है शायद बर्निंग सेंसेशन उनको थोड़ा सा कम हो। ये मुझे वही लगा, मैंने वो पूरा स्निग्ध पदार्थ सब बताए उन्हें लगाने के लिए, 4-5 टाइम लगाओ, रात को भी लगाओ, सब बता दिया। तो थोड़ा सा हम्म। चंदन का लेप का कुछ असर पड़ेगा क्या? यस यस मैम, या चंदन फिर का लेप दे चंदन वाला लाक्षादी तेल। चंदन वाला और जो चंदन, कूलिंग एजेंट हो कुछ इस तरह के एक्सटर्नल एप्लीकेशन में ना। हाँ हम एक्सटर्नल आप चाहिए उनको। गैरिक का यूज करिए ना, गैरिक और चंदन पाउडर घृत के साथ मिला के उनको लेपन कराइए। ये भी बहुत एक बढ़िया कारगर उपाय है, मैंने अपने 1-2 पेशेंट में दिया है या दाहवत मैम में। इस वर्णिगन है जो सारी वामजिष्टा सारे, हाँ जी हाँ ये वर्णिगन का लेप दिया तो घृत में मिक्स करके। हाँ, वो भी चलेगा, लेकिन गैरिक लोकल भी साथ में एप्लीकेशन, ऐड करिए मैम। अच्छा गैरिक गैरिक भी ना ऐड। थोड़ा वो पित्त का बहुत अच्छे से अवशोषण करता है। मैम और और इसमें जहाँ पे भी ब्रेक भी क्लेद तो कर वगैरह होगा ना, तो ये भी मतलब वो पैथोलॉजी को ब्रेक करेगा, संप्राप्ति को। मैम इसमें परिषेक भी तो कर सकते हैं आप, चंदन वाला लाक्षादी तेल का ऊपर से धारा डाल दीजिए। यस मैम, यस मैम। है ना? मैंने उनको डिप करके रखने के लिए बोला, पूरे जो हाथ पे दोनों भी हाँ ऐसे कर सकते हैं। ऑयल में रखना है, ऐसे बोला मैंने उनको। घी भी लगाना है, ये भी बोला, मतलब सब बता दिया। अभी तो 2-3, जब मुझे मेरे पास 3-4 दिन ही हुए, लेकिन बता दिया मैंने सब उनको। लेकिन वो कैसा कुछ पेशेंट कैसे रोज कॉल करते हैं, नहीं मैम ऐसा वैसा, तो इसलिए पूछा। ठीक है, अब हम कल बात करेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ थैंक यू रात्रि। मैम। कल बात करते हैं। थैंक यू, प्रणाम। प्रणाम, थैंक यू, शुभ रात्रि सर।